स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट एरियर्स चैप्टर 8 है विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। आज मैं आपको इसके शॉर्ट आंसर करवाऊंगी। नंबर 1, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन इन इंडिया। तो आंसर आएगा इंडिया साइक्लोन हिट उड़ीसा विथ विंड स्पीड कितनी थी 2000 किलोमीटर आवर्स ऑन 18 अक्टूबर 1999। On 29 October the same year, a second cyclone with wind speed of 26 किलोमीटर मीन्स वापस 29 सेकेंड को सेम ईयर सेकेंड साइक्लोन आया। विंड की स्पीड कितनी थी 260 किलोमीटर उड़ीसा में ही अगेन वापस उड़ीसा में ही। द साइक्लोन स्मैश 45,000 हाउसेज मेकिंग 70,000 पीपल होमलेस मीन्स 17,000 जो पीपल थे वो क्या हो गए होमलेस हो गए। Thousands of people lost their lives and properties worth crores of rupees was destroyed। और बहुत सारे करोड़ रुपीस की जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रॉयड हो गई मीन्स बहुत सारा नुकसान हुआ उनको। कहाँ पे उड़ीसा। एक्सप्लेन अबाउट द विंड्स फ्लोइंग इन द रीजन इन द 0 सेल्सियस टू 30 सेल्सियस लैटिट्यूड बेल्ट अदर आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। आंसर आएगा रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। द एयर इन दिस रीजन्स गेट्स वार्म। द वार्म एयर राइजेज एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स इन द 0 सेल्सियस टू 30 सेल्सियस लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। This wind flow from the north and south towards the equator. Number 3, explain about the wind circulation from polar regions to regions of 60 latitude. At the polar regions, the air is colder than that latitudes about 60 Celsius. The warm north air at this latitude rises up and the cold air from the polar regions rushes to take its place. The wind circulation is set up from the poles to the 60 Celsius latitude। ये आपको देखो ड्रॉ करके बताया है। विंड फ्लोइंग द upper hands of the earth। अभी नेक्स्ट है नंबर 4, स्टेट अबाउट ब्लोइंग ऑफ विंड्स ड्यू टू अनइवन हीटिंग of land and water। आंसर आएगा इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड warms up faster and most of the time the temperature of land is higher than that of water in the oceans। The air over the land gets heated and rises। This causes the wind to blow from the oceans towards the land। These are called monsoon winds। In winter, the direction of the wind flow gets reversed. It flows from the land to the ocean। Number 5, explain in brief thunderstorms। तो आंसर आएगा इन ट्रॉपिकल एरियाज thunder and lightning are frequent। The rising temperatures produce strong rising winds। These winds carry water droplets upward where they freeze and fall down again। The swift movement of the falling water droplets along with rising air create thunder and lightning। This is called thunderstorm। Next, give reason है नंबर 1, due to high speed winds roofs of houses can be lifted and blown away। तो आंसर आएगा when high speed winds pass over the roof of houses the air pressure on the surface of the roofs decreases। As a result, roofs try to lift upwards towards the lower air pressure area। Number 3, if roofs were weak and not joined strongly they could be lifted and blown away। Thus, due to high speed winds the roofs of houses can be blown away। Number 2, in summer sometime the bicycle tube gets burst। The answer आएगा air is filled into the bicycle tube to keep it tight। The bicycle runs smoothly with proper air pressure in the tube। In the summer, due to heat the air in the bicycle tube
Expands so air pressure in the bicycle tube increases. Number 4, if the air pressure increase more than certain limit, the tube must the tube may be burst. Hence, in summer, sometime bicycle tube gets burst. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली आंसर है मीन्स डिटेल में लिखना है एक्सप्लेन हाउ साइक्लोन डेवलप. तो आंसर आएगा वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट एंड द वेपर गिव्स बैक हीट व्हेन वेपर condenses into liquid. Before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. When water vapor changes back to liquid form as raindrops, this heat is released in the atmosphere. The heat released in the atmosphere warms up the air around. This air tends to rise and causes a drop in pressure. More air rushes to the center of the storm. This cycle is repeated. The chain of events ends with the formation of very low pressure system with high speed winds revolving around it. It is this weather condition which is known as a cyclone. Factors like wind speed, wind direction, temperature and humidity contribute to the development cyclones. Number 2, state the destructive effects caused by cyclones. Answer आएगा cyclones can be very destructive. It depends upon the wind speed and location. Strong winds push water towards the sea shore even if the storm is very far. These are the first indications of approaching of cyclone. The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. The low pressure in the eye of the cyclone lifts water surface in the center. The rising water may be as high as 3 to 12 meters. It appears like a water well is rushing towards the shore. As a result, the sea water enters the low-lying coastal areas, causing severe loss of leaves and properties. It also reduces the fertility of the soil. Continuous heavy rainfall may further the flood situation. High-speed winds accompanying a cyclone can damage houses, trees, communicable system, etc., causing tremendous loss of life and property. ये आपको क्लास वर्क की बुक में और बुक की बुक में लिखना है और इसे लर्न करना है. थैंक यू. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको न्यू वीडियो में करवाऊँगी. आज आपका ये चैप्टर अभी इनकम्प्लीट है. ठीक है, थैंक यू. आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके जो ब्रीफली इनकम्प्लीट वो करवाऊँगी.